Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ansar Ameer, teaching as a professor of biology in the Sunrise College. I'm teaching since 13 years the subject biology. I got my master's from Agriculture University, Faisalabad in subject soil science and plant sciences in 2001. Today, I'm going to deliver a lecture in the topic importance of water. पानी जो है water इसकी it is a medium of life. Without water, life can't exist. पानी के बगैर जिंदगी का जो वजूद है वो नामुहाल है. So पानी जो है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम आप तफसीली बात करेंगे. वाटर इज फर्स्ट पॉइंट इज वाटर इज मीडियम ऑफ लाइफ. पानी जो है वो जिंदगी का मीडियम है. इफ यू लुक अराउंड इन आवर इनसाइड आल्सो अराउंड, पानी जो है हमारी जिंदगी जो है वो हमारे वजूद का तकरीबन 65 से 89% हमारी बॉडी का हिस्सा है. पानी के बगैर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. पानी जो है वो इसकी मौजूदगी में एज ए सॉल्वेंट तमाम रिएक्शंस होते हैं. हत्ता कि फ्रॉम हम जो है च्यूइंग करते हैं, खुराक की चबाते हैं और उसकी जो है वो पानी की मूवमेंट, पानी की वजह से जो है वो हमारे बोलस की मूवमेंट, खुराक की मूवमेंट होती है, डाइजेशन होती है. और फिर जो हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें जो एब्जॉर्प्शन होती है वो भी पानी की मौजूदगी में होती है. पानी जो है वो हर सेल्स में, हमारे ब्रेन में, हमारी बोन्स में मौजूद है. हालांकि सीमिंगली बोन्स में पानी नजर नहीं आता, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो बोन्स में होती है वो अराउंड 20% है. इन बोन्स देयर इज 20% water is also present. In our brain cells, if you look in brain cells, the water is maximum found there is about 85% in our brain cells. So पानी जो है वो इसके बगैर life is impossible. So first the topic about importance of water, that is water act as a solvent. Solvent mean the part of solution that dissolves solutes in it. Solutes mean that are soluble in water substances. Water itself is a polar molecule. पानी एक polar molecule है, so it prefers dissolving substances, polar substances like salts, नमकियात वगैरह इसमें हल हो जाते हैं. इसके अलावा जो है ऐसी चीज़ें which are polar also they have capability of forming hydrogen bonding like alcohols, जैसे कि अल्कोहल्स है, चीनी है, शुगर, ये भी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो पानी का मॉलिक्यूल जो है वो इटसेल्फ ए पोलर डाइपोलर मॉलिक्यूल. इट शोज टू पोल्स इन इट्स मॉलिक्यूल. So it prefers dissolving substances like the salts. Maximum salts dissolve हो जाते हैं पानी में. इसके अलावा जो हमारे जिस्म में डाइजेशन होती है वो भी पानी की मौजूदगी में होती है. पानी और जो इंजाइम्स होते हैं हमारे जिस्म में, इंजाइम्स जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वो एक्ट करते हैं. अदरवाइज इफ देयर इज नो वाटर, देयर इज नो एंजाइम एक्टिविटी, देयर इज नो डाइजेशन. सो पानी जो है एज ए सॉल्वेंट इम्पॉर्टेंट रोल है इसका. बट नॉन पोलर सब्सटेंसेस कांट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस लाइक लिपिड्स, ऑयल्स, दे आर नॉन पोलर, they don't show any charges, so water can't support them. They may form a layer over the water, so they are lighter in weight, can't dissolve in water. That is why the non-polar substances like lipids, the proteins, they make the structure of an organism, structure of our body. Because they are non-polar, they form the structure, they are insoluble in water. So water is medium of life. Water dissolves substances, surrounds the substances, help in digestion of substances.
On other side, if we look the process in photosynthesis process in plants, photosynthesis वो तरीका होता है जिसमें पौधे हवा से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी from the roots they uptake water, or they make their food in the leaves by the process of photosynthesis. This water is also essential for photosynthesis. So photosynthesis is main biological reaction that occurs in plants. So if water is not there, so no photosynthesis occurs. So water is important for this. Water also brings cooling process, stability in temperature in our bodies, in the environment. In our body, our body temperature is maintained by the water itself. Also in the surroundings, they also help in surrounding temperature stability. That is, if one example is, if there is a hot, there is a warmth, अगर गर्मी है तो पानी जो है we get perspired, हमें पसीना आ जाता है, जिससे क्या होता है, water moves in vapor form from liquid vapor from our surfaces, so it causes cooling. In many animals like dogs and some rats, there is they give out their tongues. From there the perspiration occurs. So water stabilizes the temperature of the universe, the part of earth in which we are living, biosphere. So pani as a stabilizer of temperature. Now in the today age, if these cars are dry, on the roads, they have the radiator there. Their engine temperature, their car temperature, vehicle temperature is maintained by water that is moving in the radiator. So water is a stabilizer. Water also protects the body, protects our body parts. Like in our brain, there is water, maximum water, that is 85% in our brain cells. So it saves us from trauma. It's the water in our body, internal body structure, it moist, keep our body parts moist. In our eyes that are always moist, so it saves eyes from rubbing or from friction. In our body, in our nostrils, in lungs, they are always moist. That helps in absorption of gases. In our intestine, they are moist conditions there. And one thing that is important, our blood, that is flows in our body, and heart is going on pumping the blood. That blood also, in it, the composition, there is more than 80-90% water is there in blood. So if there is no water in blood, there is a coagulation of blood, there is a death. So this is so important, water as a protecting us. ओके सर, बहुत कितने मिनट दी थी?